Now today in this lecture we'll have a brief introduction of corporate restructuring. लास्ट क्लास में हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का इंट्रोडक्शन किया था एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन एक पार्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का कि कॉर्पोरेट को ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मर्जर्स एंड एक्विजिशन को समझने के लिए it's important that we get to know about corporate restructuring. Corporate restructuring क्या होती है ये हम समझ लें। So corporate restructuring can be constructed as almost any change in capital structure, in operations or in ownership that is outside the ordinary course of business. If you want to note it down, I repeat that corporate restructuring can be constructed. कैसे की जा सकती है corporate restructure? By way of capital structure. Capital structure में change किया जाए, debt equity का share change किया जाए, उनकी operational capacities में change किया जाए, उनकी ownership capacities में change किया जाए. So these are the means through which the corporate restructuring can be done. So let me write what I just said, that corporate restructuring can be considered as almost any change in capital structure, in operations or in ownership that is outside the ordinary course of business. This is what we call corporate restructuring. That it can be by means of change in capital structure, equity debt equity share में change कर दिया जाए, operational capacity में change किया जाए, incorporation of more and more machineries, incorporation of more and more capital intensive technology, etc. can be a means through which the things can be done. Or it can be by change in ownership में change के through भी capital restructuring की जा सकती है. So let's just understand corporate restructuring, what major shift, what major changes corporate restructuring can actually lead to. It can lead to the enhanced, better, improved corporate strategies. Then it can be in form of new investment in plant and machinery. It can be by way of divestment or through sell-off. So let's go in depth, थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर 1 ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, नंबर 2 द फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. Operational restructuring, it means change in the operational capacity. It can be introducing new machinery, it can be introducing new tools, or it can be outright partial purchase. हो सकता है नई मशीनरी पार्शली और completely परचेज किया गया हो. सेल ऑफ और कंपनी को इंटायरली सेल ऑफ कर दिया गया ताकि इसकी परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े. And change in the product lines, existing product line. For example, initially the company might be, you can take an example of Horlicks initially was in the field of the kids section only. Later on it entered into the women's Horlicks section as well. So change in the product line, they have changed कि पहले वो सिर्फ किड्स के लिए ऑफर करते थे, अब वो फीमेल्स के लिए भी हॉर्लिक्स ऑफर करते हैं. डाउनसाइजिंग और अपसाइजिंग. डाउनसाइजिंग मीन्स जो भी अनप्रॉफिटेबल अंडरटेकिंग्स हैं तो उसको क्लोज कर दिया जाए. फॉर एग्जांपल मारुति 800 वो अनप्रॉफिटेबल है आज के टाइम में, हेंस few years back the company closed the production
production of the Maruti 800 car and the non-strategic facilities, etc. Secondly, financial restructuring, action by a firm to change its debt and equity share. Simply operational capacity में ना change करके जो ownership में change करना, because we know the equity shareholders are the owners of the company. So it can be the case that the company want to change the debt equity share, the debt equity ratio of any company. So that is what we call the financial restructuring. Thank you.